Hi everyone, welcome to my channel. This is a place for you to learn a lot of new things, get a lot of new information on, and grow your knowledge base. So, if you're someone who's interested in listening to discussions, reviews, then this is the channel for you. And I hope that you enjoy our today's discussion. So, now moving towards the discussion video. And today we have Arnav with us. Hi Arnav, thank you so much for joining us. And I am really thankful to you to have agreed to this. And so before we begin today's discussion, our discussion for today is going to be a lot about business and entrepreneurship. So before we dive into that part of it, I would just request you to introduce yourself for the audience who may not know you. So a little bit about your professional background and what do you do? All right. So first of all, thank you so much for inviting me. And my name is Aarnav Kalra. I'm an entrepreneur. I have a digital marketing agency known as BEFORV. We are quite popular on Instagram. We have around 5 lakh followers on Instagram. And the niche of our page is related to filmmaking and photography otherwise. But that is just the niche part of it. Otherwise, the whole concept behind it is that we provide services related to media marketing, media promotions, branding, brand consultancy, all of it. And we have worked with around 45 brands on a global level, and we have a lot of clients in branding, more than 800 clients to be precise. All right. I think I that's also one of the reasons why I was thinking of inviting you for this discussion because I do follow your page and I do Yeah. keep looking at the kind of content that comes across Mm, and mm, the way the Instagram page precisely, like that's what mm, as me as an audience can mm. see. The way it has Yeah. progressed and grown over the years is Mm, something that is very, like you feel very inspired that, wow, like this is Thank you so something that much. you've Yeah. seen, like obviously we've seen it since the beginning Mm, and now where it yeah. has reached, like, you do feel that you've seen the arc grow and Mm, that's why I wanted to start this discussion on the note that mm, uh, this term that you also mentioned in your introduction that you're an entrepreneur and mm, we do hear this term a lot post pandemic, right? ऐसा नहीं yeah. था कि इससे पहले हमको पता नहीं था कि entrepreneur कौन होते Mm, हैं या entrepreneurship क्या होता है but I हाँ. think somewhere before the COVID-19 came, we would Mm, generally use the term business. कि अगर yeah. आप कुछ आपका शॉप है या आपका कोई ब्रांड है तो आप बोलोगे कि मैं Mm, एक बिजनेसमैन हूँ या आई रन अ mm, बिजनेस but this term mm, entrepreneur has suddenly gained a lot of popularity post pandemic, like post the time when we were at home and a lot of mm, people started building their own little local brands from home. They mm, started their own family mm, businesses for many reasons. You're at home, you're getting mm, bored, or financial mm, crunch, or anything. And this mm. term also, I think, for me, it gained a lot of popularity post Shark Tank India came in, Yeah. and we all Yeah. saw Absolutely. these big brand owners and we all know boat, we know Lenskart, but we did Mm, not know who the who were the people who started it, who were the yeah. owners of the brand. Absolutely. Now Yeah. that we have a face, वो वर्ड ही Mm, एकदम से फेमस हो गया कि अब and exactly. now we are like we what we see is a lot of people wanting to be called entrepreneurs, like even if you have a Rather than a small, businessman. Yeah. हाँ, वो एक Mm. टर्मिनोलॉजी में शिफ्ट आ गया है कि आप वैसे चीज तो सेम ही होती है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, या बट आई थिंक entrepreneur को ज्यादा लगता है, इसलिए पीपल want to be called that. या so Mm. where I wanted to start the discussion was that why does one feel that post pandemic becoming a businessman is a cool thing now?
it's something that everybody wants to become an entrepreneur. आपके पास कोई छोटा Mm, सा भी अगर आइडिया होगा तो you want to just go ahead with it. capitalize on that. Yeah. There's a confidence that has Mm, suddenly come in the young, especially the younger lot these days, that people of mm, our age, that पहले बिजनेस करने से लोग डरते थे, वो मम्मी पापा फैमिली वाला बिजनेस को ही mm, आगे लेके जाते थे. न्यू बिजनेस, mm. bootstrap is something people would not really go ahead for. But now Yes. we can see a lot of youngsters wanting to become, business people. They want to start their Because startups. yeah, you're right. Because I feel कि social media also plays a very vital role. सबको Yeah. दिख रहा है कि everyone is trying something and everyone is trying. Maybe a lot of people are doing it because of FOMO. ये भी हो सकता है कि fear of missing out है और तभी they're trying to do something कि try तो कर लिया. Which is Mm. actually not wrong. मतलब try करना important है कि Yeah. और स्पेशली पैंडेमिक के बाद इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली हम सब ने देखा कि हाल क्या था चीजों का एंड इट वाज वर्स मतलब people were laid off from their companies even if they were part of Yeah. their companies they were not getting their salaries on time so basically it was a crisis right फाइनेंशियल क्राइसिस था तो Mm. अपना बॉस होने से बेटर कुछ नहीं है आई बिलीव Yeah. सो सो But आई थिंक इसलिए अभी ये ट्रेंड हाँ. बहुत ज्यादा चालू हो रहा है बट इट नेसेसरी डजंट मीन कि अ, इस ट्रेंड की वजह से और इन सब चीजों की वजह से पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे ही बोल रखा है दैट दे आर एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टफ बट एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस Yeah. So you started your business way before the pandemic started. Like या it was या not post the COVID. So why did या you start? Why what made you start your business? That I will do something different. Yeah, the thing is that, like I have mentioned in my other interviews and in the articles, that I always wanted to do something of my own. Before with something that became known, became big, kind of big. Yeah. But उससे पहले also I've tried a lot of things, uh, similar niche से related, similar services से related, but it had failed. कहीं Yeah. पे कुछ workout नहीं किया, कहीं पे कुछ नहीं हुआ. So I've started around 2017 or something like that. Okay. मतलब तब से सोचा हुआ था that I wanted to do something of my own, which is in like final year of college. Okay. And And after that, uh, yeah, sorry. sorry, Hmm. please go ahead. So after that, फिर before we started before with 2019 and फिर 2020 में pandemic आ गया. But pandemic was otherwise very good for us as a business perspective Hmm. because everyone was at home and stuff. So we were able to approach a lot of people globally and Yeah. they were answering on time and we were able to convert them into clients. So pandemic was basically a it was the main thing when we, like you mentioned, hit the arc. वहां पे ही मतलब the main growth started. And we did see that a lot of businesses actually flourished during the pandemic, Yeah. especially the Mm. digital media business people who want to do Yeah. something online. And it Yeah. was also a time when a lot of people felt inspired by, people like, okay, let's just take an example of any of these big entrepreneurs who already have big brands in India. They somehow made a social media presence. They made their presence felt on the digital platform as well. And Mm. looking at them, that these are people who are very young. They are not like somebody you would look at somebody like Ratan Tata and feel like he's somebody very aged. So you feel inspired, Mm. but then you also feel कि यार इतना नहीं कर पाएंगे. But when you look at Mm. somebody who is 30, 40, 25, then you feel that okay, if Mm. this person can do it, then I can also do it. And you feel Yeah. motivated. And I think Yeah. that's where a lot of the youth today
got their motivation from, that we will also Hmm. start a new business, we will also start something Hmm. from scratch. Hmm. But Like what with you also, I see yeah, that even you are trying a lot of things. Even you yeah, started something of your own and your YouTube channel. That, मतलब वही है. It all boils down to one thing, that you're trying, right? Everyone is trying. Who's trying yeah, to make it big. Uh, Conventional path follow नहीं करना है अगर, तो you'll have to huh. try. Something, because this is precisely the time of your life where you have your maximum energy, you have the Hmm. maximum potential, where Hmm. potential to grow also. Because once you Yeah. reach a certain age in your life, I'm not saying you can't grow at that age, but your 20s and your 30s are especially the time when you can really put in your 100% energy mentally and physically. Yeah. So why not try everything Yeah. possible instead of having any Absolutely. regret? Yeah. Hmm. So what I was coming to was that what is the challenge of building a business without any financial support, like without any funding? Yeah. देखो, I believe something that plays a vital role is कि आप कर क्या रहे हो, the services you are providing. क्योंकि Hmm. services business तो फिर भी I think you can build without any funding, और घर से पैसा लिए या external funding लेके. Services something जो सबको चाहिए, right? A lot of brands need media promotions, a lot of Yeah. brands need digital marketing, branding. So I think service business फिर भी it is very easy to build from scratch without any funding, because there are startups that require pre funding also without even being launched. Hmm. So ये आई थिंक अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता मेरा, तो आई थिंक मेरे को भी फंडिंग की जरूरत होती, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड टू प्रोड्यूस समथिंग, यू नीड मनी, राइट? Yeah, of course. हाँ. तो यही है कि मतलब बिजनेस बिल्ड करने में सबसे पहला चैलेंज तो यूजुअली फंडिंग आता है, वो हमें आया नहीं. ठीक है, बिकॉज हमारा बूटस्ट्रैप है अभी तक. आगे का पता नहीं, वॉट एवर वी गो फॉरवर्ड विद. उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज इज टू फाइंडिंग द राइट पीपल टू Hmm. वर्क with. Yeah. I think this is a biggest issue. मतलब we have a huge database जिसमें around, मैं एग्जांपल देता हूँ, हम कैंपेन्स रन करते हैं, we have an HR to और हम कैंपेन्स जो हायरिंग के रन करते हैं, एक कैंपेन में 50-60 लोग अप्लाई करते हैं. एवरीवन वांट्स टू वर्क एज एन इंटर्न और एज अ टीम मेंबर, क्योंकि Yeah. ठीक है, इट्स ग्लैमरस कि और बीइंग एसोसिएटेड विद द स्टार्टअप, राइट? Hmm. सो उसके बाद जब रियलिटी पे चीजें आती है, बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, दे आर एक्सपेक्टिंग क्रेजी मनी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट इशू. एक टीम बिल्ड Yeah. करना इज द बिगेस्ट इशू. Hmm. जो सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है, एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इंटरव्यूज हो गए, स्कैनिंग देयर रिज्यूमेस, टेलिंग देम टू फॉलो प्रोटोकॉल, अ लॉट ऑफ वर्क. Yeah. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, बिकॉज स्टूडेंट्स दीज डेज, स्पेशली द वंस दैट आर younger than us, 19-20 की एज में हो गए, तो दे आर लिविंग इन अनरियलिस्टिक वर्ल्ड, आई बिलीव. Yeah. तो वहां से इशू आता है, बिकॉज हमारा डेटाबेस इतना बड़ा है. विद इन द पास्ट 3 years we have rejected around 1900 graphic designers, which is not a small number. And all of this is a very organized data. मतलब emails पे literally, if you want, we can show it to you. मतलब I'm so sure about it. So this is something we have been facing Yeah. a lot. मतलब कि finding the right people to work with. ठीक है, आप किसी को ज्यादा पैसा दो इतनी छोटी एज में, तो फिर दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. उसको कम दो तो फिर उसकी ईगो पे बात आ जाती है. यू कैन नॉट करेक्ट देम, यू कैन नॉट से एनीथिंग. दिस इज द I बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव बीन फेसिंग. uh but I will very good point that you raised, that आप ज्यादा पैसे दो तो प्रॉब्लम हो सकता है, कम दो तो प्रॉब्लम हो सकता है. कम का तो सुना था, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इन गिविंग मोर मनी? ये ज्यादा दो. इफ समवन इज 19-20 एंड ही और शी, आपके पास इमरजेंसी, आपको हायर ही करना है, यू आर पेइंग क्रेजी मनी फॉर अ स्टाइपेंड, तो दिस स्टार्ट मतलब सर पे चढ़ जाते हैं लिटरली. Okay, okay, in ऐसा that होता है. sense. दैट्स व्हाट आई मेंट कि
बस फिर हमारे आगे कोई, बिकॉज वो उनकी भी गलती नहीं है, एज ही वैसी होती है, वो कि लगता है कि सारा Yeah. कुछ उनके अराउंड रिवॉल्व करता है। Yeah. बट Okay. आई बिलीव एवरीवन इज रिप्लेसेबल, अगर आपको नहीं लगता तो, बट अगेन फाइंडिंग समवन इज वेरी मच True. पेनफुल। द True. करेक्ट पीपल जो आपके विजन में बिलीव कर रहे हैं, आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, literally, मतलब again we are grateful that we are able to work with people, but finding them is the biggest challenge, I believe. Also consistently working with them, right? Like you don't want people to Yeah. leave you in between. Absolutely, because the problem with interns या employees in general is that uh, they don't understand legal documents and stuff, उनको फर्क नहीं पड़ता, कभी भी छोड़ देते हैं। और ठीक है, आप जो भी है, बट आपको एक चीजें देखनी है कि ठीक है, if you're working with someone you need to look into a bigger picture, especially an entrepreneur के साथ अगर आप काम कर रहे हो, Yeah. तो आपको एक बिगर पिक्चर पे फोकस करना पड़ता है। अगर आप अभी शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करके यू आर लीविंग दैट, तो आपका यू आर रिप्लेसेबल। बट वही फिर True. इट इज अ होल साइकिल कि आप किसी को समझाओ। जब द थिंग इज दैट जब ये लोग सीखने लगते हैं, तब इनका मन करता है कि तब अब हम कुछ भी कर सकते हैं, लेट्स लीव। बट मिलता उन्हें कुछ नहीं है, दे आर अगेन एंड अप बीइंग इन अ सिमिलर जॉब रोल और सिमिलर Yeah. इंटर्नशिप प्रोफाइल। हाँ, तो यही है, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एवरी entrepreneur, because I have friends and I know people who are again hiring people very frequently like we are, उनका भी similar complaint है that again building a team is a very tough thing. Yeah. But how much part of your business dealing with interns uh, deals with mentoring them? Because I'm sure a lot of them will must be also asking you that sir आगे क्या करना चाहिए, कैसे ग्रो करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, बिकॉज हाँ when you हाँ। start working वो पैसा एक बार फ्लो करने लगता है तो आपको सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, you know. And हाँ, so how much of तो your dealing is related to that? देखो, if an intern, there are a few interns that ask these kinds of questions। कई लोगों को तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, जैसे रोबोट होते हैं कि यार काम कर लिया, वी आर डन फॉर द डे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। बट Yeah. देयर आर अ फ्यू interns जिनको इन सब चीजों के बारे में पूछना होता है, और हम मेंटर करते हैं, हम बताते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, दिस शुड बी नेक्स्ट स्टेप। देखो यार, हम भी तो यही चाहेंगे कि यार वेन एवर देयर टेन्योर इज ओवर, आप हमारे पास ही रुको। एक Yeah. रियलिटी ये है ऑब्वियसली। तो हम तो देखो, हमें अपना भी सोचना है, सबको वही है। बट या मेंटर, when it comes to mentoring them, we obviously tell them a clear picture and tell them ki, this is the way to go forward if you want to grow or something, because Yeah. again they are low key they are inspired by you। शुरू में तो इंस्पायर्ड होते हैं, फिर एक ही बंदे की शक्ल देख देख के वो भी बोर हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि यार अब क्या, फिर उसके बाद तो फिर भी दे आर स्टिल इंस्पायर्ड बाय whoever they are working with। but वही है, mentoring तो I think is important, but they need to understand that there is a fine line between mentoring and one other thing, कि हम आपको हर चीज बच्चों की तरह सिखा नहीं सकते। स्पून फीडिंग नहीं करें। हाँ, स्पून फीडिंग, और स्पून फीडिंग इज समथिंग कि मतलब उनको बहुत ज्यादा आदत ही होती है, बिकॉज वही है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट प्रॉब्लम विद एम्प्लॉयज और समथिंग लाइक दैट, कि स्पून फीडिंग इज समथिंग दैट आपको करना ही पड़ता है, बिकॉज उनको आदत ही इतनी होती है इन सब चीजों की। From college and school, I think that is what is हाँ, very क्योंकि कॉलेज में भी आई थिंक यू स्टार्टेड टीचिंग पीपल, राइट? सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? मैं ये जानना चाहूंगा कि वही है, स्कूल इज अगेन नॉट सेइंग दैट, बट स्कूल में आपको बेसिक चीजें तो सिखा ही नहीं रहे, आपको सिर्फ yeah. पढ़ा रहे हैं। तो Actually, वही है कि curriculum is not designed in that way. अगर आप या curriculum देखो, हाँ जैसे हम्म, teaching in college or in I
do deal with college students also, and I am actively Hmm. teaching school kids. Uh, करिकुलम वाइज जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है उसमें तो बहुत बढ़िया है सब कुछ कि मतलब Hmm. आप एंड यू नो गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑल दे हैव एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट Yeah. करिकुलम इन स्कूल उनको बताया Hmm. मतलब मैं खुद हैरान थी कि व्हेन आई वाज इंटर्निंग एट अ Hmm. गवर्नमेंट स्कूल एंड मैंने पूछा आपका कौन सा पीरियड है एंड बच्चे कह रहे 6th 7th के बच्चे कह रहे मैम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का पीरियड आई वाज Hmm. लाइक वाओ 6th क्लास Hmm. स्टूडेंट्स नो व्हाट दिस इज बट when you start interacting with them, you Hmm. get to know that usually वो implementation तक जब आता है वो तो उसमें Hmm. इतना vast difference आ जाता है that you Hmm. know it's somehow just stays as a part of a theory in your mind. वो Hmm. practicality बच्चा नहीं सीख पाता है. तो 11th 12th में भी Exactly. सेम है आप टैक्स Hmm. वगैरह पढ़ाते हो इकोनॉमिक्स में आप हाँ, फाइनेंसेस पढ़ाते हो बट I don't think any of us knows how to file the taxes or do it एग्जैक्टली। properly unless वो हाँ सीए के साथ बैठ के जब पहली सैलरी आती है आप फिगर आउट करो कि करना क्या होता है. हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये तो मतलब वही है। देखो, आई बिलीव, नॉट टू साउंड वेरी क्लीशे, कि स्कूल आपको सिखाता क्या है? स्कूल इज जस्ट टीचिंग यू टू बिकम एन एम्प्लॉय, दैट्स इट। आपको रिस्क लेने के लिए तो सिखाता ही नहीं है वो। Actually, this is something which is at a very transitional phase, if I can say right now. या। I also written a paper on transformative age of education post the pandemic, which where I was discussing that we are somewhere in the middle right now. वो पहले का जो system था जो आपको employee या बनने इट्स के लिए ऑब्वियसली सिखाता बेटर। है और अभी आगे वाला फ्यूचर ऐसा है जिसमें आप को एम्प्लॉयर बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि वोकेशनल स्टडीज आ गया है एक्सपेरिमेंट आ गया है. अब 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप के लिए मोटिवेट किया जा रहा है. आई डोंट नो व्हाट दे विल डू बट लाइक इट्स स्टिल इन टॉक्स. सो वी आर स्टिल समवेयर स्टक इन बिटवीन कि वो पुराने ख्यालात वाले टीचर्स भी हैं. young lot like us are also there who are more proactive कि नहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं थ्योरी पे फोकस नहीं करते हैं क्योंकि हम खुद वो सीख के आ रहे हैं लाइक व्हेन वी वर इन 11th 12th वी नो हाउ वी सफर्ड इन कॉलेज सो वी डोंट वांट कि आगे का कि फ्यूचर दे भी शुड, ऐसा ही या रहे. आगे का लॉट, या हाँ एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो वही समवेयर है, देयर हाँ, इन बिटवीन. ट्रांजिशन तो है, नो डाउट। हाँ, ट्रांजिशन तो है, नो डाउट, बट हाँ, मे बी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इट इज इजियर इन टर्म्स ऑफ जस्ट वन थिंग, कि they are aware about these things या because या of their access to the study material, whatever it is, or social media. देखो, वो तो है, awareness तो ज्यादा ही है, which is a fact. ट्रू ट्रू. So I'll take the discussion to a different area now, which is money. So one thing that I want to really touch upon is I've heard a few people say that in some of their interviews or when they feature in let's say a panel discussion, especially the younger lot, the younger influencers and all. There's often this tag attached to them that when you start growing, when that money starts flowing in, suddenly there are a few people around you who say that you're showing off, or uh, let's say you get an X amount of money and आप जो आपके रेगुलर सैलरी ब्रैकेट से थोड़ा ज्यादा हो गया है. So as any normal person you would want to spend it, buy something, do something with it which is let's say which you're not doing before, right? So how do you as a person deal with that let's say maybe your friends are thinking that suddenly the money is getting to your head, or suddenly you are let's say it might not be happening. ऐसा जरूरी नहीं कि वो हो रहा हो बट आगे एक इम्प्रेशन पड़ जाता है कि ये शो ऑफ कर रहे हैं. Like that's what they always say that suddenly people start feeling that we are showing off, but you're not showing off, it's just You're not showing off. You're just upgrading your lifestyle. That's what I think. yeah yeah Yeah. So, देखो, to be honest with you, अगर
I really don't deal with this. If I'm being very honest with you, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या सोच रहा है. Because Yeah, again, to be honest with you, अगर आप एक entrepreneur हो और या आप अपना खुद का कुछ भी कर रहे हो, तो there will be a lot of naysayers and people who will say shit. That's the reality. But अगर आपका focus ही उस चीज पे है तो, और the point is that आप पैसा कमा किसके लिए रहे हो, अपने लिए ही, right? yeah, तो आप किस पे, किस you end up spending on yourself or people you like, family. love, whatever it is. Yeah. So यही है. So डील करने वाला देखो, मैं हो सकता है कि मेरे बारे में भी बोलते हो, किसी के बारे में भी लोग बोलते हो. It's quite possible. Yeah, But यार, not, it's not worth something I it. don't do. मैं, yeah, not worth it. I believe कि it's a wastage of time. आप अपने लिए कर रहे हो उनको. Maybe I think people start saying this because low key they are jealous. Maybe that's the scene too. But I know, how do you actually stop yourself from ये तो एक पॉइंट होगा कि ये Hmm. सच नहीं है. बट Hmm. एक रियलिटी ये भी आता है कि when you start growing financially, it Hmm. can reach to your head if you Obviously. uh, at a very young age, if you suddenly get a lot of money Yeah. and attention, वो suddenly एक Hmm. ego आ सकता है कि I'm better off than Yeah, other people. absolutely. So how do you stop हाँ. yourself from that? मेरे को जब भी थोड़ा सा ऐसा लगता है that things are trying to get in my head, because obviously एक naturally आपको thoughts आते हैं ऐसे, which is the reality, कि आपको लगता है कि यार you're doing really great, but फिर लगता है यार आपसे तो इस एज में और कितने लोग क्या क्या कर चुके हैं. मतलब दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ ग्राउंडेड. Yeah, मेरे को लगता है यार अभी तो कुछ भी नहीं किया है. जब वो चीज लगती है ना, अगेन देयर इज अ डिफरेंस कि अगर मैंने इतना पैसा बना लिया, वो एक्स वाई जी बंदे के लिए बहुत ज्यादा हो, mm, बट मेरे को अभी भी वो कम लगता है, तो फिर वहां से आई थिंक वो लगता है कि यार नहीं, दिस इज नथिंग, ऐसा yeah, लगता है. yeah. हाँ. I feel that somewhere वो एक like not just financially I'm talking, but हम्म. just success. Like in one of my videos, I was हम्म. talking to this professor, and we were हम्म. discussing the definition of success. That आज हम्म. के जमाने में आपके पास जितना पैसा है, या let's say आप कितना frequently बाहर travel करते हो, उसके basis पे people decide whether you're successful or not. But if हम्म. we actually think, then in that definition, teachers or professors or people who are in academic, they can never be successful, because you're never going to pay your teachers in lakhs and crores. That is never going to या. happen. कोई institution या. academic research के लिए इतना पैसा नहीं खर्च करेगा. नहीं So देते. यू आर एब्सोल्युटली वो राइट. definition of success ही change हो गया है अब, कि वो हाँ, exotic यू आर राइट कि, locations. हाँ, Yeah, जो दिख रहा है, मतलब यू आर yeah, एब्सोल्युटली राइट. फिर वही बात आ रही है यहाँ पे, दैट लाइक वी डिस्कस, सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. आप दिखा क्या रहे हो, वो क्या रहा yeah, है, yeah. रियलिटी क्या है, वो तो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ अ फेक वर्ल्ड आल्सो दीस डेज. बट It या, is. हाँ, बट सक्सेस की डेफिनेशन, आई बिलीव सक्सेस की डेफिनेशन आपकी अचीवमेंट्स rather than materialistic चीजों से ज्यादा, Mm, mm, achievements एक vital role play करती है कि of course. what, how successful you are. Yeah. I think the best judgment would be where you were when you started and where you are now, because of course Hmm. your starting point and my starting point is also different. Let's say Absolutely. let's say, okay, not me, but let's say when you started your business, you were at A point and now you're at B point. But when Hmm. a already existing rich businessman's son or daughter starts their Started. starting point, Hmm. वो A point नहीं होगा, वो आपके A point से बहुत different होगा. तो आप उसको compare कर ही Absolutely. नहीं सकते हो. Comparing, you cannot compare two individuals. You cannot Yeah, to compare two people. It's मतलब totally different. But because scenario different है, conditions different है.
तो Yeah. वही है। But okay, but do you compare your business with, let's say, a competing business or a channel or an Instagram page who is एब्सोल्युटली, doing एब्सोल्युटली, similar work? बिकॉज हम, आई एम नॉट ब्रैगिंग दिस, जितने भी इंस्टाग्राम पेज है हमारे नीच में, उन्होंने इतना डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा। और देर आर काउंटलेस पेजेस आई कैन नेम, और इतने ब्रांड्स के साथ भी वो रेगुलरली काम नहीं करते, एक दो बार किया होगा, तो ऑब्वियसली कंपेयर नहीं, उनको तो हमने पीछे छोड़ दिया। अब वी आर देखो, द थिंग इज दैट व्हाट्स नेक्स्ट, राइट? तो वी आर Yeah. ट्राइंग टू गेट इनटू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो वहां के लिए अब सोच रहे कि वो कैसे क्रैक करें, कि अगर हमें प्रोडक्शन में घुसना है, फॉर एग्जाम्पल, Yeah. तो कैसे करना है वो। तो अब दिस इज दी नेक्स्ट, मतलब मेरे को लगता है कि जो ये हमारे साथ के पेजेस थे, उन्होंने इतना डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा। मैं नीश की बात कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी रिलेटेड पेजेस, Hmm. और ना इतने ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया। तो आई थिंक वी डू ऑब्जर्व देम, हम देखते हैं कि आई थिंक वो एक अवेयरनेस में रहना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ना हो कि अगर आपको पता ही नहीं आसपास क्या चल रहा है, वो आपसे आगे Yeah. ना निकल जाए, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। ठीक Of है, course. देयर आर अ फ्यू एजेंसीज जिनका ऑब्वियसली हमने लिटरली उनसे काम लिया है और ये सब किया है, कि मतलब नहीं, डायरेक्टली उनके क्लाइंट्स को अप्रोच किया है, तो थोड़ा सा ब्रूटल भी होना पड़ता है आपको अगर आप बिजनेस कर रहे होते हो। बट या Yeah. कंपटीशन को देखना आई थिंक अवेयरनेस के लिए जरूरी है, बट वो आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्ले ना करे, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है यार। But इसमें कि मनी पार्ट कितना प्ले करता है कि let's say my okay, just for an example, a YouTube channel which has 1 million subscribers, and there's another YouTube channel which also has 1 million subscribers. Almost same hai. But one channel is earning more and the other channel is, in that respect, not earning more. चाहे वो उसका reason कुछ भी हो. So, do you, as a business enterprise or as a person who's running a business, also compare that how much money the other business is making in comparison to my business? या You do, and like उसका क्या like वो फायदा क्या पता भी है? चल जाता है, उसका फायदा क्या है। देखो, इंस्टाग्राम पे देयर आर पेजेस जिन्होंने हमारे जैसे सिमिलर ब्रांड के साथ काम किया है। Okay. ठीक है, कईयों ने बाटर सिस्टम पे काम किया है, कईयों ने पेड प्रमोशन किया है उस ब्रांड के लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू इंस्टाग्राम पेजेस जो हमसे बड़े हैं, बट दे आर चार्जिंग लेस मनी बिकॉज हमारे इनसाइट्स ज्यादा है। ठीक है, Okay. and we are charging more, and brands are willingly paying that because there are, we also promote influencers on our page related to the niche itself. So अब किसी को हमारा काम पसंद है बिकॉज हमारे प्रमोशन सटल होते हैं, वी आर वेरी, मतलब देखो यार, मार्केटिंग में रिजल्ट तो गारंटीड होते नहीं, विच इज द ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, Yeah, of course. हम, हाँ, हम सिर्फ आपको प्रमोट कर सकते हैं, एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमारा सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इतना अच्छा है, देयर आर ऑफिशियल ईमेल आईडीज, उनको रिप्लाई मिलता है, अग्रीमेंट साइन होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहता है। तो एक एक बारी में से बाय 10 स्लॉट्स ऑन आवर पेज, मतलब ऐसे भी हुआ है हमारे साथ, देयर आर इंस्टेंसेस। अगर मैं एक पोस्ट के 100 $200 भी लेता हूँ, तो दे आर विलिंग टू पे अपवर्ड्स ऑफ $2,000, $2,500 टू जस्ट प्रमोट। बट इफ आई एम मेकिंग दैट मनी, अगर मैं $2,000 बना रहा हूँ, बट आई एम श्योर दे आर मेकिंग 10 times मोर देन दिस बिकॉज ऑफ बीइंग प्रमोटेड ऑन आवर पेज। I mean, that is a part of it which is, hidden from the people who are, जैसे आपने शुरू में बोला था ना कि काफी लोग होते हैं जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं बट वो होते नहीं है, क्योंकि there are these examples or these details which you will only know when you work in that field. वो एक आप सिस्टम में घुसोगे तभी आपको पता हाँ, चलेगा. हाँ, और वो भी आपको टाइम से पता चलेगा, ये नहीं Yeah. कि आज से ही पता चल जाएगा, बिकॉज यू हैव टू, अगेन यू हैव टू, वो एक हसल करना पड़ेगा आपको, तभी एक आइडिया लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज Yeah. अगेन वी हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स टू, बट मिस्टेक्स हमें डिफाइन नहीं करती, जो हमने गड़बड़े की है बहुत की है,
बट वो एक स्टॉप पॉइंट नहीं था, आई बिलीव। और I think, अभी भी देयर yeah. आर अ फ्यू थिंग्स। या प्लीज, अब कुछ नहीं, इट वाज नथिंग। यस। I was just saying that, this is also a point that I was discussing with you when I was I approached you for this video that हम्म um, people nowadays, they want the result, but वो process हम्म को live नहीं करना चाहते हैं। और ये मैंने एक वीडियो में भी एग्जैक्टली। पहले बोला था कि there is this comedian who had shared in one of his videos that सबको शाहरुख खान बनना है, but वो पिछले 30 मेहनत नहीं साल करनी का वो किसी। मेहनत नहीं करना है। You You're don't absolutely right. This is something which is very, very true. और even my mother says this कि कई बार even I am very result oriented. कई बार मैं भी I'm trying something और result नहीं आते, and this is the same thing. She says कि process ही enjoy नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है? yeah, like Because immediate result आ गया फिर यही लगता है what is next. एक दिन की खुशी है वो, तो I believe. इमीडिएट रिजल्ट अगर आ भी जाता है ना, तो हाँ, आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हो, क्योंकि exactly. वो फेम एकदम से आ गया। And then that is हम्म why I asked that question that, how do you stop it from going to your head? Because when you are हम्म working hard for it consistently, then it will not go to your head because you know how much hard work has gone behind it. वो एकदम से हम्म overnight success आ जाता है, then I think it's when it reaches your head. yeah, Uh, like, especially absolutely. because like, I'll give you a very very weird example, but the last school that I was interning in, was an all boys school, and हम्म every class I was teaching from 6 to 12. Every class student was an MC Stan fan. I think I got the fan, हाँ, name. हाँ, MC yeah, Stan. yeah, This rapper, उसके fan है सारे हाँ, बच्चे। और मुझे नहीं पता था हम्म कि ये कौन है, और हम्म ये कैसे टाइप का म्यूजिक है। Like, I know what rap is, but I did not know who this rapper was, and हम्म how he got so famous, what are his songs and everything. And through cultural activities in every class, every student is singing this song, every student wants to be like him. And I went online, I searched about him, and I हम्म got to know that this person is a very recently got fame person who is हाँ, yeah, supposedly very rich, and is also very vocal about the fact that he's very rich. So yeah. the He student, became rich. Otherwise, matlab he yeah, started from the ground only. yeah, Yeah, yeah. So yeah, students are, especially these, ये सारे 11 से 18 साल वाला slot है, hmm, they are very influenced by the current rapper. Like, वो अभी जैसे हैं दिखने में, कि वो, absolutely. he's wearing diamonds and he's singing and he's popular. Hmm, They are hmm. not concerned, or they are not going back and looking that where is he coming from, Yeah, what has the he hard done. work he put in. Yeah. Yeah, I'm sure there must have been a backstory also, but they don't have the Hmm, patience. वो कहते कि मैम इतना हमारे में patience नहीं है, वो अभी बहुत famous है ना, हमको ऐसा बनना है। वो they don't want to they don't want to only know that hmm, what has he done. So that is hmm. where the, that what I was talking about, वो lag है बीच में बहुत बड़ा, कि Yeah, सबको you're absolutely successful होना है। right. हाँ, वही शाहरुख खान वाली बात जो आप बोल रहे हो, that is absolutely right. कि Okay, बनना हर किसी को है, and no one is willing to work for it. yeah. And okay, last question, last part of the discussion. How do you deal with the risk of the business? Because I'm sure business also comes with a lot of risk factors, that what if this Hmm. does not work one day, or I don't know what kind of risks are attached to your business, but a lot of businesses suddenly, very, like, in within a month, the whole business collapses, or the whole, Yeah. the thing, the money goes bankrupt ho jate hain. And a lot of the times people are not able to analyze these risks, that this can also come, and how do I protect my अगेन business from this. आई थिंक हमारा की पॉइंट ही एक डिस्कशन का होगा, अवेयरनेस। अगर Okay. आप अवेयरनेस में हो तो यू कैन नॉट नेवर गो बैंकरप्ट। अगर आप अनरियलिस्टिकली, अगेन देयर इज अ थिंग कॉल्ड इन बिजनेस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप यार आपको पता है आप अगर इतना रिस्क ले रहे हो, यू स्पेंडिंग
you are literally flooding out money on spends which are not needed, or maybe Hmm. on marketing or something like that which is not needed Right. right now. और अगर आप कर भी रहे हो तो अगर आपको पता है that you will be able to manage it, आप उसको convert कर सकते हो, प्रॉफिट नहीं तो कम से कम उसको इक्वल तो कर सकते हो, तो आई थिंक योर बिजनेस कैन नेवर गो बैंकरप्ट. बट अगेन इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है क्या है Hmm. इंडस्ट्री. यूजुअली प्रोडक्ट बिजनेस इज समथिंग जो इजिली दे कैन रन आउट ऑफ मनी बिकॉज दे हैव टू कीप अप विद द प्रोडक्शन, Yeah. डिमांड, सप्लाई, अ लॉट ऑफ थिंग्स, मार्केटिंग स्पेशली. बिना मार्केटिंग के आई थिंक प्रोडक्ट बिजनेस तो चल ही नहीं सकता है, एंड दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन मार्केटिंग. तो Yeah. यूजुअली आई बिलीव तब थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है. बट सर्विस बिजनेस में इतना कोई बड़ा रिस्क नहीं है. ठीक है, Okay. सर्विस बिजनेस को आप इजीली सरवाइव करा सकते हो इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ बिजनेस. आपको प्रॉफिट और लॉस समझना चाहिए. दैट्स इट. दैट्स अ वेरी बेसिक Yeah. थिंग कि अगर आप प्रॉफिट लॉस समझ पा रहे हो एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैथ्स बिहाइंड बिजनेस, आई थिंक दैट्स गुड इनफ. वैसे सर्विस बिजनेस में इतना रिस्क नहीं है, बट प्रोडक्ट बिजनेस में आई एम श्योर रिस्क है. बट अगेन डिपेंड भी करता है कि आप अगेन वो व्हाट इज हाउ मच यूर इन Yeah. अवेयरनेस. अगर आप ऐसा कोई बिना रिसर्च के कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो चल जाएगा, बट इवेंचुअली यू विल एंड अप Yeah. बीइंग Okay. बैंकरप्ट. Uh, one last thing from हाँ, uh, how big a role does a patience play in building a business? Because वो overnight तो होगा वेरी नहीं. बिग, very big, because patience is very important. Yeah, because there are even, ठीक है, we are doing good for ourselves, a lot of businesses are doing good for themselves, but yeah, there are times कि आपको 20-20 दिन you're not able to earn money. There Hmm. are times आप काफी टाइम पैसा ही नहीं कमा रहे हो. there are times कि आप nothing is working out in your favor. Employees are not working out in your favor. They're not motivated enough to work with you. A lot of मतलब वही है. It's just a small business is just like a proper organization only. यहाँ Yeah. पे भी हर चीज सिमिलर होती है. वही है कि patience is the biggest factor. मतलब there will be times that you are not able to grow, make money. तो आपको तो you'll have to, because you know you have seen the results, but आपको you need to maybe change your strategies or something like that. Yeah. You have आता to. है, उससे रिजल्ट आता है, बट टाइम लगता है कई Yeah. बार तो. हम्म, I think a lot of if I have to just quickly sum up in the conclusion हम्म, part that a lot of the times people give up in between only. वो या पेशेंस ही नहीं रख पाते कि दिस इज, या यू आर एब्सोल्युटली राइट. मतलब यूजुअली व्हेन यू गिव अप और उसके बाद ही आपको रियलाइज होता है कि यार अभी तो ये क्रैक हो सकता था या होने वाला था. या व्हेन यू गिव अप एवरीथिंग कम डाउन टू जीरो, आई बिलीव. या और ऐसा नहीं है कि एवरीवन फील्स लाइक गिविंग अप, बिकॉज आपको कई बार लगता है, एक सेल्फ डाउट तो आता ही है ना यार, ये आप कर क्या रहे हो. हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि वो तो ह्यूमन हमेशा नेचर ही है. हमेशा आप अपने गेम के टॉप पे होगे ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं एंड हो सकता, स्पेशली एब्सोल्युटली. for a business which you are trying to grow like it's at a very initial वो एकदम बेबी वाले स्टेज पे है. अगर आप हम्म, तभी गिव अप कर दो जैसे a lot of people started their if I can say their uh, journeys in entrepreneurship during the pandemic, but after a few months they all stopped. And I have followed a lot of pages because I felt that या they have good content. you're absolutely right, because पैंडेमिक में तो स्पेशली रीसेलिंग बिजनेसेस बहुत शुरू हुए थे, और स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस लाइक जो ज्वेलरी और समथिंग लाइक दैट बेच रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग नथिंग राइट नाउ. Yeah, I बिकॉज think वही है, आपने yeah, फॉर द फन ऑफ इट तो आपने स्टार्ट कर दिया, बट आप फिर वही है ना, व्हाट इज द कॉस्ट एक्विजिशन, सब कुछ क्या है, कैसे आप पैसा बनाओगे, वो सब तो थोड़ा देखो. प्लानिंग जरूरी है, ओवर प्लानिंग इज समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड,
बट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है. ओवर भी रिस्की है और अंडर भी बहुत रिस्की है कि कुछ प्लान ही नहीं हाँ किया और एग्जैक्टली. बस शुरू कर दिया. हाँ. So I think a lot of हम्म. people where they a lot of good businesses which हम्म. I was looking forward that ये थोड़ा भी ग्रो करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया. अगर वो नहीं छोड़ते तो by now, हम्म. like post the lockdown, they could have really flourished if they would have kept that हम्म. patience that Yeah, consistency. exactly. Patience is Yeah, patience and consistency is yeah, the most important thing in anything otherwise, not even yeah, business. मतलब यार अगर आप job भी कर रहे हो, you're not getting a good boss, but you have to be patient, because it will maybe help to boost your resume or CV, whatever. yeah, yeah. Uh, So that is where we wrap up for this discussion. I think this has to be one of the most informational plus easy breezy discussions on the channel, because I am somebody who belongs to a business family. My father is a businessman, but I have yeah, yeah. never, I've never approached it in that sense Mm, before. mm, Especially, when I started, I thought of this, doing of this whole thing. I did not start mm, this by thinking that, this is a business. It was more like a fun thing that you want to do because mm, you like research, you like to speak on topics. But mm, when you actually read about it and you actually study people who are running businesses, one gets to know that it's not that easy. It's not something that mm, वो myth बन जाता है कि अरे कोई भी कर लेगा, हम भी कर सकते हैं, but इतना easy नहीं mm, होता है. And mm, so that's something that a lot of people, I'm sure, who will go through this discussion till the end will definitely learn that it's something that you need to be very consistent with, something that requires a lot of hard work and a lot of absolutely. training. अब वो फील्ड वाली ट्रेनिंग हो या खुद ही आप अपने आप के ऊपर काम कर Mm, रहे हो, whatever way it is, but there has to be a lot of hard work, definitely. Nothing can beat hard work, right? If you enjoyed the video, kindly press on the like button to show us your appreciation. And if you want to share with us your views, you can write it down in the comment section. I hope you enjoyed today's discussion, and now we will meet in the next video.